ओके, आज हम बनाएंगे पानी पूरी, जिसके लिए सिंपल एंड एकदम क्विक जो तरीका है वो रेडी है। ये मैंने रेडीमेड पानी पूरीज ले ली हैं, पूरीज रेडी हैं रेडीमेड। एंड अनियन कट किया हुआ, जो ऊपर से हम पूरीज में स्टफ करेंगे लिटिल बिट, अगर आपको पसंद है तो। आई लव अनियंस। ये सेव है, मस्ट है ये भी। एंड मीठी चटनी खजूर की, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी टू मेक। खजूर को आप, जो डेट्स होती हैं उन्हें भिगा दीजिए थोड़ी देर पहले, करीबन आधा घंटा पहले भी भिगाएंगे तो इट्स फाइन। पानी में जितना आपको मतलब रखना है क्वांटिटी भिगा दीजिए, एंड देन जस्ट मैश इट अप। और जस्ट बीज निकाल के बाद आप ग्राइंड कर लीजिए अच्छी तरह से, या जस्ट हाथ से मैश कर देंगे तो भी इट गिव्स यू नाइस टेस्ट। और चख लीजिए, इफ़ यू वांट मोर sweet you can add sugar or gur to it, but I think for me it's fine. I don't like sweet added to my pani puri, so just to show you I've made this. And this is the most important one, the green spicy green chutney जो मैंने रखी है बना के। एंड ये है मेरा मसाला। ओके, दिस इज मुंबई पानी पूरी। मुंबई में द पूरीज, these puris are stuffed with chickpeas and potato मिक्स करके एक पेस्ट बनता है, जो मिक्सचर वो स्टफ होता है। एंड दिस इज द पानी पूरी पानी basically, which I have made from the ready-made पानी पूरी मिक्स मसाला। ये मसाला लेके मैंने according to the packet, whatever it was written on the packet, so I've made it. and एक जग मैंने बना के रखा है। Just give it a little stir and taste it before you start using it, and it really tastes nice. But what some people do is, अगर आपको पानी पूरी का ये पानी मिक्स मसाला, रेडीमेड मसाला पानी में ऐड नहीं करना है तो प्लेन वाटर लेके लोग पुदीने एंड ग्रीन करिएंडर एंड मिंट की चटनी बना के, स्पाइसी एकदम चटनी ऐसी बना के वो पानी में मिक्स कर लेते हैं। एंड that is what they make sometimes, sometimes some people do like that. And वो जो spicy पानी होता है, that is also enough, it gives you the same taste. But if you want to go to the pure pani puri taste, you have to add that masala, that mix pani puri masala to it. So this pani is ready. Now everything is ready. What I'm gonna do is just gonna give little तड़का to this, क्योंकि मुंबई में क्या होता है कि ये जो मसाला है इसे वो लोग अगर आप देखेंगे तो तवे पे उनका वो जो द पीपल हु सेल पानी पूरी, दे हैव बिग पैन, बिग तवा, जिसके ऊपर ये मसाला साइड में धीमी आंच पे पकता रहता है, गर्म होता रहता है। एंड देन दे स्कूप इट आउट, फिल इट इन द पूरी, एंड देन दे गिव इट यू। सो मेरा ये, मैंने chickpeas and potato, this is chickpeas and potato mixed together. I've mashed them with my hand nicely. You don't have to mash it very hard because we want chickpeas to be seen and you can taste it in your mouth. So हमने ये ऐसा रखा है। Now I'm gonna do little तड़का to it. It's not a big thing. Just I've taken this pan with a teaspoon of oil, not too much. And what we'll do is just little तड़का ही करना है हमको, कुछ नहीं इसमें डालना है। We don't want to add anything, क्योंकि उस मसाले में we want only that boiled taste in it. So हम सिर्फ नमक ऐड करेंगे and इसमें हम उसे फ्राई कर लेंगे। एंड वो गरम गरम ही रहे तो ही अच्छा लगता है, तो हम इसे अभी कर लेंगे and then we'll fill in the puris. So we'll wait till this pan gets hot, and then we'll put this masala mixture in it. तो अभी मैंने ऐड कर दिया है इसमें पैन में। अब मैंने इसमें कुछ नहीं ऐड किया, I've just added salt according to taste. Salt ऐड करना, because all other stuff which we were gonna use for our pani puri is all spicy and nice, tangy, nice taste. So we don't want this stuff to add anything extra to it and then get something different taste. So we're just gonna give it a little masala tadka. That it was not, basically we'll not call it a tadka, just
गरम किया है हमने, तो ये यहाँ रेडी है। ओके, ये ऐसे ही रहता है अगर आप बॉम्बे के हैं या बॉम्बे जाएं, इफ़ यू वांट टू। एक्चुअली हर स्टेट की अपनी अपनी पानी पूरी है, अपना अपना टेस्ट है, पर बॉम्बे का ये है विच आई लाइक द मोस्ट। ये इस तरह से साइड में उनके बिग जो पैन रहता है उसके ऊपर साइड में ऐसे रहेगा, एंड वो धीमी आंच पे नीचे पकता रहता है। इट्स ऑलवेज नाइस एंड हॉट, सो ऐसे पकता रहता है, एंड दे जस्ट स्कूप लिटिल बिट आउट हेयर एंड fill it in your puri and serve you with the nice taste of their pani. So this is ready. हमने थोड़ा सा इसे गरम करना था, वो हमने कर लिया है। Now what I'll do is I'll show you how to fill the puris and eat it. ओके, तो हमारा सब सामान जो है रेडी है। हमने अपना जो चिकपीस एंड पोटैटोस था उसे भी हमने गरम कर लिया अच्छी तरह से, थोड़ा सा ऑयल डाल के, तो इट्स नाइस टेस्टिंग नाइस नाउ। एंड सॉल्ट हमने ऐड किया है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। एंड सेव इज़ रेडी। पानी मैंने जो पानी पूरी था वो जग में से थोड़ा सा बाउल में इसमें निकाल लिया है, सो दैट वी कैन डिप आर पूरी इनटू इट। चटनी इज़ रेडी, तीखी चटनी and meaty chutney, and onion is ready. So now I'll show you how to make the puri. These are the puris which are here, so I'll show you how to make it. So here we go. You have to pick up one puri with your hand, hold it in your finger like this, and with your thumb just go slightly and softly make a hole here. Slowly. Look, this looks nice. Now because I'm holding a camera in my another hand, so I won't be able to do it, so I'll show you like this. Here, take a little tiny spoon and then fill this in the puri. Yeah. You know, they also do it, they'll do it like this. It's a bowl. You can take this stuff little bit on the plate, and then you can scoop it with your thumb if you're very good at it. I'll show you little bit like this. You can, yeah, here it goes. The man who will serve you on the stall will do like this with the thumb. He'll go with the thumb. So here you've you've got the masala in the puri. Then what I'll do is I'll add onion to it because I love onion, so it has to be onion. And then what they do is, your choice is yours. If you want that meaty chutney, just I don't like meaty chutney, so not too much sweet, so I'll just add a little bit to it to show you. And then the tikhi chutney, which is my favorite, spicy one, I'll add lots of it. Yeah. And then what I'll do is, if you want you can, otherwise actually sev is not that important, because when you put the sev on the puri and then you dip it in, the sev will all go they'll start floating on the water. So okay, once it's done, press it and then dip the puri in the bowl. Here is it, and then it goes into my mouth. Delicious. It's really very nice, and everything is very nice, tasting perfect. So this is how we make the puri and eat it. So I'll show you one more. Press it. We'll do it with the thumb this time.
We don't need spoon. Alright, scoop in the masala. Okay, you can, it's not that first you have, yeah, the first thing goes into the puri is this. Then you can go according to your taste. Meathi chutney, tikhi chutney, yeah, then onion. What some people do is, they don't put the onion until they have scooped it in the water. So some people fill the water first and then add the onion, but my one hand is busy, so here it goes. Fill it with the water, and then if you want you can add the sev to it, but once you have filled the water, don't leave it too long on the plate, otherwise it will go cracked, because the puris are very soft, they can't take water for too long. So just fill it in and it goes in your mouth. Very bad of me. I know I shouldn't be doing this, but I can't help myself. So here all the ingredients are ready to eat, simple and quick. Sometimes you should go for ready-made things, so go for ready-made puris, ready-made pani puri masala mix. This you have to work a little bit. Boiled chickpeas, boiled potatoes mashed together. Green chutney, of course, you have to make at home. Khajur chutney, of course, you have to make at home. Onions, you have to work hard to cut it. And then your puri is ready. Eat as much as you want. Okay? Then make it, eat it, and tell me if you like it or not. Bye-bye.